Yes, starting with scheduling technique. Now, scheduling is generally one of the critical activities for project in any of the field. As I said, scheduling is one of the important activity because based on that only we'll come to know at what time the software will be developed, around what time we can give it to the customer. So customer को भी एक idea आ जाता है कि okay 1 month down the line, 3 months down the line ये software कब ready होके हमको मिलेगा. Software project scheduling is nothing but actions that distributes estimated efforts across the planned project time interval by allocating the efforts to specific engineering tasks. So scheduling is nothing but एक estimation निकालते हैं हम time and efforts का कि planning में कौन सा priority पे है, कौन सा important है, तो इसको कितना time लगेगा. Based on that, किसको कितना resources लगेगा. So uh, that scheduling help us to understand that what is going on in the project and how we can handle it. So there are two basic techniques we use in software engineering for project scheduling, that is critical path method and the PERT, that is program evaluation review technique. Now, critical path method is one of the most widely used scheduling method. इसमें क्या होता है कि see we know that projects में बहुत सारा activities takes place simultaneously. So it may happen that some activities are dependent on other activities because of which जब तक पहला activity खत्म नहीं होता दूसरा activity we cannot start. For example, team A cannot test the database connectivity unless team B updates the same databases. अभी एक database है अगर team B is supposed to update, so unless and until it is updating the database, A1 cannot, team A cannot take out any test on that because the database has not been updated. So these are called as dependent tasks. Now, based on what project is, how large it is, how complex it may be possible there is only one critical path, or it may be possible that it is having more than one critical path. So critical path टर्म डिफाइंस दैट कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और वो एक्टिविटीज गिवन टाइम में कंप्लीट होनी ही चाहिए. इफ नॉट देन द प्रोजेक्ट विल बी डिलेड अ लॉट. सो दैट डिले इन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज यानी जो भी एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ के लाइन में आ रहे हैं वही एक्टिविटीज डिले हो गया मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर विल ऑल्सो बी डिलेड. See, if the delay occurs in any activity involving critical path, then it will ultimately lead to the delay in the project deliverables. If such condition occurs, then resequencing is done so that the project deadline can be achieved. क्योंकि ऑब्वियस है कि क्रिटिकल पाथ लाइन में यानी वो लाइन में आने वाले एक्टिविटीज ही डिले हुए तो उसके आगे वाले और डिले हो जाएंगे विच मीन्स प्रोजेक्ट का जो डिलीवरी डेट था वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा. सो इन दैट केस हम क्या करते हैं हम वापस रीसीक्वेंसिंग करते हैं एक्टिविटीज का वापस प्रॉपरली प्लान करके उसका सीक्वेंस उसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं टू कैरी आउट सो दैट जो डेडलाइन है एटलीस्ट उतना ही रहे. So this method is based on mathematical calculations that are used for project scheduling purposes. Critical path method was first introduced in 1950 as a joint venture between Remington Corporation and DuPont Corporation. Initially, critical path method was used for managing plant maintenance project. The original path was developed for the construction of the project. Now, CPM can be used in any project where interdependent activities are involved. सो दीज आर द जस्ट इंफॉर्मेशन कि जो भी हम scheduling करते हैं सबसे पहले हम critical paths के ये आइडेंटिफाई करते हैं. सी फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन क्रिटिकल पाथ मेथड. सो बेसिकली सीपीएम में 5 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज एक्टिविटी स्पेसिफिकेशन. WBS is used to find out which activities are involved in the project और उसमें से कौन से critical path में से. Once you are done with that, then we सी कि अगर हायर लेवल के एक्टिविटीज है क्रिटिकल पाथ के एक्टिविटीज है जो बहुत डिले हो रहा है देन वी नीड रीसीक्वेंसिंग. उसका सेकंड है एक्टिविटी सीक्वेंस रीऑर्गेनाइजेशन यानी आइडेंटिफाई द टास्क दैट टेक्स प्लेस बिफोर द क्रिटिकल टास्क, आइडेंटिफाई टास्क दैट शुड बी कंप्लीटेड एट द सेम टाइम एंड आइडेंटिफाई द टास्क दैट शुड हैपन इमीडिएटली आफ्टर क्रिटिकल टास्क. तो ये सब पॉइंट्स जब हम कंसिडर करते हैं हम पता चलता है कि क्रिटिकल पाथ के आगे या पीछे एक्टिविटीज जो भी है वो प्रॉपरली उस हिसाब से कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं. इफ दे आर डिलेड तो क्रिटिकल एक्टिविटीज डिले होंगी या नहीं उसका इम्पैक्ट क्या होगा और उसका रीऑर्गेनाइजिंग हम कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द नेटवर्क डायग्राम. वंस द एक्टिविटी सीक्वेंस इज डिफाइंड we make a network diagram for the better understanding of the entire schedule. The next is estimates for each activity. जैसा डायरेक्ट एस्टिमेट्स हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूज किया है
तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमको डायरेक्टली कौन से एक्टिविटीज कंप्लीट करने हैं, किसमें ज्यादा बजट जा रहा है, हर एक का कॉस्ट क्या है, एफर्ट्स क्या है, कितने रिसोर्सेज लगेंगे। सो इन सब का एस्टिमेशन एक आ जाता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। देयर इज अ नीड फॉर डिफाइनिंग 4 पैरामीटर्स फॉर ईच एक्टिविटी की क्रिटिकल पाथ मतलब है या नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। सो 4 पैरामीटर्स आर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, दैट इज ES and EF. Earliest start time is when the earlier dependent activities are completed, one can start the earliest time of an activity. यानी डिपेंडेंट एक्टिविटीज है, तो जब तक पहला एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरा हम शुरू नहीं कर सकते। तो जैसे ही फर्स्ट एक्टिविटी इज कंप्लीटेड, वी कैन स्टार्ट द सेकंड एक्टिविटी एट द अर्लीस्ट, इवन इफ इट इज बिफोर इट्स स्टार्ट टाइम। नेक्स्ट इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम मतलब दिस टाइम जो हमने स्टार्ट किया है, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम प्लस जो उसको कंप्लीट करने के लिए ओवरऑल टाइम लगा, सो दैट स्टार्ट टाइम प्लस द करंट टाइम विच टुक to finish that project is called as earliest finish time. देन इट इज लेटेस्ट फिनिश टाइम, यानी लेटेस्ट इन द सेंस की स्केड्यूल में बैठा नहीं बैठा, तो कितना टाइम हमको लगा, द मोस्ट recent टाइम ऑफ एन एक्टिविटी completed without the delay in the project, that is called as latest finish time. And then there is latest start time, that is finish time और उसका एक्टिविटी ड्यूरेशन कितना हुआ वो। देर इज फ्लोट टाइम। फ्लोट टाइम मतलब कितना एक्सटेंड होने का चांसेस है। तो फ्लोटिंग टाइम इज एस्टिमेटेड अपना अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो हमने अज्यूम किया था वो माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो एक्चुअली विच टुक प्लेस वो। सो दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग टाइम की हम कितने से डीले हो रहे हैं। So this was the critical path method. इसका advantages are visual representations of the project activities. As you can see over here कि ये जो diagram है, so ऐसा network diagrams का visual representations देता है, because of which it is very simple to understand कि critical paths के task कौन से है, उसके पहले कौन से है, कौन सा interdependent है, कौन सा simultaneously शुरू हो सकता है। To calculate project deadlines to track the critical activities. So ये सब चीजें easily समझ में आ सकती है। So this was all about critical part method. Next video, we start with PERT technique, that is the second method for project scheduling. So in case of doubts with CPM or so, please let me know.